सो हेलो हे हाय, अभी हम लोग मैमोग्राफी के बारे में स्टडी करने वाले हैं एंड इसके अभी हम लोग इंट्रोडक्शन को देखने वाले हैं। सो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी। सो अंटिल रिसेंटली ब्रेस्ट कैंसर वाज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ फ्रॉम कैंसर अमंग वुमेन। लंग कैंसर नाउ हैज़ बिकम द लीडर। पहले ब्रेस्ट कैंसर लीडिंग कॉज था, लेकिन अभी लंग कैंसर लीडर बन गया है। एंड ब्रेस्ट कैंसर रिमेन्स द सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर अमंग वुमेन। वुमेन्स के बीच में सेकेंड मोस्ट कॉमन जो कैंसर है वो ब्रेस्ट कैंसर है, एंड फर्स्ट लंग कैंसर है, एंड द फर्स्ट स्किन कैंसर है। एंड ब्रेस्ट कैंसर अकाउंट्स फॉर 25% down from 32% of all new cancers detected in US। सो ये जो होता है 25% में ब्रेस्ट कैंसर होता है, एंड पहले 32% होता था, एंड ऑल न्यू कैंसर डिटेक्टेड जो हैं वो यूएस में एंड वुमेन में, एंड 12% डाउन फ्रॉम प्रीवियस 18% ऑफ ऑल कैंसर डेथ्स। 12% जो डेथ्स के रेट्स में भी कमी आई है। एंड ACS एस्टिमेट्स दैट अमेरिकन कैंसर सोसाइटी जो है एस्टिमेट करती है दैट 1 in 8 अमेरिकन वुमेन विल डेवलप एन इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर एट सम टाइम इन हर लाइफ। सो जो इसके अकॉर्डिंग 8 में से 1 वुमेन को इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर होता ही होता है, एंड अप्रॉक्सीमेटली 296,980 न्यू केसेस इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन 2013 एंड 232,340 आर इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर एंड 64,640 are carcinoma in situ, and nationwide 39,620 women and 410 men will die from breast cancer। सो वर्ल्ड वाइड जो ब्रेस्ट कैंसर है इज स्टिल द मोस्ट कॉमन कैंसर इन वुमेन, एंड विद 1.7 million new cases documented in 2012। So this is down from 2.7 million reported in 2008, and female breast cancer incidence rates have decreased by approximately 2% per year between 1999 and 2005। So in 2012 there were more than 2.6 million breast cancer survivors in the US। This indicates the cancer are being found earlier। अगर अर्ली फाउंड किया जाएगा, ट्रीटमेंट किया जाएगा, तो उसमें चांसेस होते हैं सर्वाइविंग के ज़्यादा, एंड द चांस दैट ब्रेस्ट कैंसर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ए वुमेन्स डेथ इज अबाउट 1 in 36। तो चांस है कि 36 में सिर्फ एक वुमेन की डेथ होगी। एंड मैन कैन ऑल्सो डेवलप ब्रेस्ट कैंसर, बट दियर रिस्क इज बिटवीन 1 to 2% ऑफ ए वुमेन रिस्क। So one case of male breast cancer occurs for every 150 cases of female breast cancer। So अगर जैसे 150 फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है तो उसमें से एक केस हो सकता है जो कि मेल ब्रेस्ट कैंसर का भी हो सकता है। सो एंड ब्रेस्ट कैंसर फॉर लेस देन 1.1% ऑफ ऑल कैंसर्स फाउंड इन मैन, and because breast cancer is uncommon among men, so the symptoms may not be recognized as early, and often the disease progresses and to an advanced stage तक and before it is diagnosed। And the first step in prevention of any disease is to understand the risk factors and the disease। तो फर्स्ट स्टेप होता है प्रिवेंशन में एक किसी भी डिसीज़ के, वो होता है अंडरस्टैंड करना उसका रिस्क फैक्टर क्या क्या है, एंड ओवर टाइम सर्टेन रिस्क फैक्टर्स हैव बीन
identified for breast cancer, yet specific causes of most breast cancers are still known, अभी तक भी unknown है. And the current best defense against this disease is to women having regular mammogram करा सकते हैं, that early detection, जिससे कि early detection हो पाए. And the ACS sets guideline for early detection practice for all common types of cancer. Breast cancer guideline vary depending on women's stage, वुमेंस की एज पे भी डिपेंड करता है. एंड दीज गाइडलाइंस जो होती हैं इंक्लूड मेमोग्राफी एंड क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, एंड MRI हैज़ बीन एडेड फॉर women who have a high risk profile. एंड रेगुलर मेमोग्राफी जो होती है कैन बी की टू सर्वाइवल with the breast cancer because many breast lesions may be detected before they become symptomatic. And or metastasized mammograms can detect a lesion to in size, and such lesions may take 2 to 4 years to be palpable. तो मेमोग्राम में जैसे 2 mm का लीजन डिटेक्ट किया जाता है, जबकि इसको जब अगर पैल्पेबल के हिसाब से देखें तो इसको 2 से 4 साल लगेंगे जब ये पैल्पेबल हो पाएगा. एंड सेल्फ एग्जामिनेशन और क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में पता चल पाएगा. सो इट इज़ रिपोर्टेड दैट वंस द ब्रेस्ट ट्यूमर हैज़ रीच्ड 2 centimeter in size, it's often already metastasized and spread to other regions. So the average survival time for patient with metastatic breast cancer is only 2 years होता है. And it is recommended that if supported by their healthcare provider, for at-risk women and men undergo annual mammogram के अंडर को जाते हैं. एन एफर्ट टू डिटेक्ट ब्रेस्ट lesion prior to the metastasis, so the earlier lesion is detected and more options there are for treatment for the patient, and better is the prognosis. so इसका अर्ली डिटेक्शन एंड प्रोग्नोसिस हो सके तो चांसेस होते हैं सर्वाइवल के. एंड mammography has evolved into one of the most critical and demanding radiological examinations that can be performed. mammography evolved हो गई है काफ़ी अच्छे से. एंड मेमोग्राफिक प्रोसीजर्स जो होते हैं वो हाईली डिपेंडेंट होते हैं ऑन द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ द मेमोग्राफर पे. एंड मेमोग्राफर इज ए रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजिस्ट होता है जो कि रिसीव करता है एडिशनल ट्रेनिंग इन मेमोग्राफी. सो एक्यूरेट एंड केयरफुल पोजिशनिंग ऑफ द ब्रेस्ट ड्यूरिंग मेमोग्राफी इज इम्पेरेटिव इन डायग्नोसिंग ब्रेस्ट कैंसर. सो मैक्सिमम जो अमाउंट होता है, सो द मैक्सिमम अमाउंट of breast tissue must be clearly demonstrated on each projection. So mammographic images must be characterized by optimal contrast and a high resolution होना चाहिए, and they must contain no artifacts that may potentially obscure a pathologic condition. So technologists become qualified through didactic coursework and professional training and hands-on experience, and are required to pass on additional certification examination. To maintain certification, the mammographer is also required to continue education in mammography on a yearly basis. So current recommendations from the American Cancer Society and American College of Radiology and other health organizations are that all women who are 40 years old should be able to choose to undergo a screening mammogram and regular mammograms. Thereafter, high risk patients
with a family history of breast cancer may be advised to begin screening mammograms at an earlier age. So, as previously stated, although the number of new breast cancer cases is increasing, so the mortality rate has decreased, and in recent years, as has been reported by the National Cancer Institute, so this increase in detection is not alarming because more women are and men are getting tested, and the overall life expectancy has risen बढ़ गई, and the decreased mortality rate supports the fact that clinicians are finding the disease at the earlier, तो अर्ली पता होने से उसको ज़्यादा ट्रीट कर सकते हैं, मोर ट्रीटेबल स्टेज होती है, एंड नो गिवन एज एट विच ए वीमेन शुड डिसकंटिन्यू द स्क्रीनिंग मैमोग्राम रेजिमेन, एंड स्क्रीनिंग मैमोग्राम के लिए कोई भी ऐसी गिवन एज नहीं है किसके बाद नहीं करना है, एंड अकॉर्डिंग टू द ACS एज लॉन्ग एज वुमेन इज इन गुड हेल्थ would be in good candidate for breast cancer treatment and has a life expectancy of 10 years or more. So she should continue to have a screening mammogram to increase the chances of early detection. अर्ली डिटेक्शन के लिए स्क्रीनिंग मैमोग्राम ज़रूरी है, एंड ऑल्दो इट शुड बी नोटेड द नेशनल कैंसर रिस्क असेसमेंट does not include women over 85. Despite many technological advances made in breast imaging, screening mammography remains one of the best diagnostic tools and can be used to detect early breast cancers before they spread. So, Mammography Quality Standards Act. So we will start this in the next lecture. मैमोग्राफी क्वालिटी स्टैंडर्ड एक्ट, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है और इसको हम लोग पार्ट्स वाइज में डिवाइड करके करेंगे. सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट एंड वी विल डू सेकेंड पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो.